Welcome back everyone. This is Mathematics Review Part 2 in your course Data Structures. Okay. आज मैं I will discuss some very basic mathematical definitions, discrete maths है ये basically. This maths that I'm going to introduce you today बहुत ही simple आपको I will just give you a flavor of it. This is an integral part of discrete maths which is the backbone of data structures, right? So first of all, look at this. You all have seen before the geometric series, right? Geometric series is integral to data structures, right? All these definitions, ये सारी definitions जो आपके सामने लिखी हैं, ये सारी, they are all a very important part of algorithm design, data structures and solving daily life programming problems. Okay, so सबसे पहले आप ये देखें कि ये क्या लिखा हुआ है. This, look at it. This is sigma. This Greek letter, it's called sigma, right? Sigma 2 sigma, my bad, this is sigma 2 raised to the power I, right? What does this mean? Sigma means summation 2 raised to the power I. This is the operand जिसके ऊपर summation लगाई जा रही है. ये वो term है, ठीक है? I is the dynamic variable that has to move. That is dynamic. Dynamic means dynamic का मतलब होता है changing. ठीक है, मैं इसको नोटपैड में आपके लिए एक्सपेंड करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी सून आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. वी हैव सिग्मा I is equal to 0 up to n2 raised to the power I. यही लिखा है ना जी. What does this mean? Let's break it down. Let's just break it down into a few small parts. ये जो लिखा है ये, sorry, the color is a bit light. This is the lower limit of summation. This is the lower limit of summation. Here, ये ऊपर यहाँ, sorry, I is equal to 0 up to n2 raised to the power I. ये लोअर लिमिट हो गई. अब हम बात करते हैं अपर लिमिट की. ये जो आपके सामने लिखा है, this is the upper limit, right? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या मतलब है? लोअर लिमिट का मतलब है कि I will start having its values from 0. यहाँ से 0 से शुरू होगा और I में आप n तक वैल्यूज प्लग इन करते जाएंगे और इस टर्म को you will sum it, right? So let me expand it for you on a new piece of paper. Okay, अब ये देखिए. Let's start doing it. Sigma, say this is I is equal to 0 up to n 2 raised to the power 2 raised to the power I is equal to. अब इसको आप कैसे expand करेंगे? We can write 2. I की सबसे पहली वैल्यू क्या है? सबसे पहली वैल्यू I is starting from 0. तो द फर्स्ट नंबर जो आप यहाँ प्लग इन करेंगे ऊपर इसके एक्सपोनेंट में, दैट विल बी 0. 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2 plus you keep moving. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप लोग एंड कहाँ पे करेंगे? You will end at 2 raised to the power what? यहाँ अब इस बॉक्स में क्या आएगा? 2 raised to the power n. जब आप इन सारी टर्म्स को सम करेंगे से ऑन अ कैलकुलेटर तो आपके पास एक समेशन आ जाएगी.
ठीक है, उस समेशन को इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है. डू यू गेट दैट पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट नोट you started from the lower limit, here was the lower limit, you ended up at the upper limit, here is the upper limit. This is the way you sum over different values of I. You sum over different values of I. Different values of I के लिए आपने एक sum generate किया, ठीक है? Keep these things in your mind. This is very important concept, right? Let's move on. Okay, ये क्या है? What is this? This is a very famous geometric series, you all know it, ठीक है? But what is this? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? Ladies, gentlemen, what is this? What does this mean? A raised to the power n plus 1 minus 1 over a minus 1. ये क्या है? This is a summation. इसको आप expand कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया. अब this is equal to, वो कहता है देखिए this is equal to this is the right hand side. ये right hand side कहाँ से आई? There is a proof to it, ठीक है? And this is the symbolic form. ये वो symbolic form है so called, जिसे आप आसान अल्फाज में आप formula कहेंगे. ये वो formula है जिसमें आप if you have a where a is any number and if you have n, तो आप you can easily find the sum out, ठीक है? एक और चीज़ जो मैंने आपको क्लियर करनी थी, लेट्स मूव ऑन टू द नोटपैड. सिग्मा, जस्ट अ सेकंड, सिग्मा I is equal to 0 up to n2 raised to the power I. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I is equal to 0 dot 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 to n 2 raised to the power I. Don't get confused, they are exactly the same. They are exactly the same. Both of them, they are exactly the same notation. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sigma 0, sorry, sigma 0 n2 raised to the power I. बच्चों all three notations, all three notations, ये तमाम, ये तीनों, they are exactly the same. ये this is equal to this, this is equal to this, this is equal to this. Don't worry, आप literature में ये तीनों देखेंगे. This is 1, this is 2, say this is 3. ये आप तीनों देखेंगे. So just don't get confused, right? Relax. Arithmetic series. This is a very famous thing. This is a very famous thing that I'm going to introduce you with. Okay. आपको कोई कहता है कि भाई मुझे first thousand नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के दो. आप क्या करेंगे? आप अगर आप जैसा कोई बंदा हो या मेरे जैसा कोई पागल सा बंदा होगा ना, पता क्या करेगा? 1 + 2 + 3, पहले 1000 तक लिखेगा, फिर कैलकुलेटर पकड़ेगा और उसको सॉल्व करना शुरू हो जाएगा और 2 दिन इसी काम में लगा देगा, राइट? दिस इज ये जो तरीका है, इन कंप्यूटर साइंस वी कॉल दिस स्ट्रेटजी द ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी. व्हाट वी कॉल इट? द ब्रूट फोर्स strategy. There is always a brute force strategy to solve a problem, but it is very inefficient, ladies, gentlemen. It is very inefficient. आप लोगों ने, you don't have to use the brute force strategy again and again. This is very time consuming, memory inefficient, space inefficient, not good, right? So what mathematicians did, उन्होंने एक simple एक formula निकाल लिया, this very simple, right? This formula, this single form n into n plus 1 over 2, ये सिंपल सी फॉर्म है. हमें कोई भी कहता है ना भाई कि आप you find sum of first 10,000 natural numbers, तो हमारा n is equal to 10,000. Plug it in, you'll get the answer out, right?
So these were some fundamental reviews. Next I will discuss a very important part, proof by induction. So just try to get good hold of these things. इन चीज़ों को Google them, start googling them, start reading your book and get hold of it, right? Thank you.